Welcome, dear students. This is our fifth lecture on the quantum free electron theory. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि according to quantum free electron theory, electrical conductivity कैसे होती है. We shall derive an expression for electrical conductivity, and then we shall see how resistivity varies with temperature. So let us start. This is Fermi sphere. Now, what is Fermi sphere? Fermi sphere is a sphere that is filled by all the states which have energy less than or equal to Fermi energy. So that implies the maximum value of energy, that is Fermi energy, corresponds to its surface. तो फर्मी स्फीयर जो है इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर के बी प्लॉट कर सकते हैं. देन द रेडियस विल हैव वैल्यू के एफ, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्लॉट कर सकते हैं. देन रेडियस ऑफ द स्फीयर विल हैव वैल्यू वी एफ, फर्मी वेलोसिटी. तो यहाँ पे हमने फर्मी स्फीयर इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर प्लॉट किया है. देन व्हाट इज फर्मी सरफेस? तो इस स्फीयर का जो सरफेस है that is called Fermi surface, and this surface corresponds to the maximum energy of free electrons at absolute zero. तो इस सरफेस के अंदर जो स्टेट्स हैं they are all filled, और इस सरफेस के बाहर जो स्टेट्स हैं they are all empty. अच्छा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम देखना चाहें, मोमेंटम p, it is given by h by lambda. h is Planck's constant, lambda is wavelength. तो हम डिवाइड b 2 पाई करेंगे और मल्टीप्लाई भी 2 पाई करेंगे. Now h by 2 pi, it is called the reduced Planck's constant, that is h bar, into this 2 pi by lambda, this is called wave number k. So we get expression for momentum as h bar k. Now अगर हम इसको in terms of vector लिखना चाहें तो हम मोमेंटम के ऊपर एक एरो लगाएंगे. So this is momentum vector. तो यहाँ पे वेव नंबर जो है it will become wave vector. So this will be expression for momentum of a free electron. और अगर हम यहाँ से velocity के लिए expression देखना चाहें, velocity of a free electron, तो the velocity will be given by momentum divided by mass. So momentum divided by mass, so we will get h bar k divided by m. अच्छा, ये जो free electrons हैं, they are moving in every possible direction. इसीलिए we have got the value of k in every possible direction in this sphere. In the absence of any external electric field, तो अगर हम मेटल पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो कई करंट फ्लो नहीं होती है. तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो डेफिनेटली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और इलेक्ट्रॉन होगा विच विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो पहले इलेक्ट्रॉन जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा. सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन, सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन. तो इसको हम ऐसे समझेंगे फर्मी स्फीयर में
कि for any electron which has got some value of k this much, उसके corresponding एक और इलेक्ट्रॉन है which has got wave vector minus k. सो इन दोनों का नेट मोमेंटम अगर हम देखें ऑन एन एवरेज दैट विल बी 0, और इसी तरह जब हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोमेंटम देखें दैट विल बी 0. सो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में that will correspond to 0 current. Now let us see if we apply an electric field E, then the force will be now force equals charge into electric field intensity. Now every free electron will experience a force given by equation number 2. The charge on each electron is minus E and the electric field intensity उसको हमने capital E से denote किया है. तो हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे that force equals the rate of change of momentum. तो हम यहाँ पे इस न्यूटन सेकेंड लॉ में इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे. We will substitute momentum from equation 1 and we will substitute force from here from equation number 2. Now equation number 1 is that momentum equals h bar k. तो इसमें हम substitute करेंगे तो we will get minus E times capital E, this is force, is equal to d by dt of the momentum which is h bar k. Now h bar, that is reduced Planck's constant, it's a constant, it will get out of the differentiation, so we will get h bar dk by dt. तो यहां से हमें dk by dt के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. dk by dt will be given by h bar इसके प्रोडक्ट में है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, it will get divided, so we will get minus E capital E by h bar. और अगर हम सिर्फ dk के लिए एक्सप्रेशन देखना चाहें तो dk will be equal to, तो dt डिवीजन में है, it will get multiplied, so we will get minus E by h bar into dt. So हम इक्वेशन नंबर 3 पर भी स्टॉप कर सकते हैं. So we get h bar dk by dt which is here, we get it equal to minus E times E, or we can write dk equal to minus E times capital E by h bar dt. So that is our equation number 4. So now wave vector of every electron gets displaced by this much amount when we apply an external field. So this is the displacement in the Fermi sphere. अब आप देखें कि ये जो शेडेड एरिया मैं बना रहा हूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो इतने इलेक्ट्रॉन्स का वेव वेक्टर डिस्प्लेस हुआ है. दिस इज क्रिसेंट शेडेड एरिया. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके वेव वेक्टर कॉम्पेंसेट नहीं हो रहे हैं. बाकी जो टू द लेफ्ट वॉल्यूम है स्फीयर का, उन इलेक्ट्रॉन्स के वेव वेक्टर आपस में कॉम्पेंसेट हो रहे हैं. सो दैट मीन्स ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस शेडेड क्रिसेंट एरिया में
हैं, only those electrons will contribute to the conduction of current. तो इसका मतलब है कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन को, बल्कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं विच लाई क्लोज टू फर्मी सरफेस, दे कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन. अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दें तो इसमें हमें डी के मिलता है प्रोपोर्शनल टू dt, यानी जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जितना टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये शिफ्ट इन द वेव वेक्टर भी कंटिन्यूअस रहेगा. तो कॉन्सिक्वेंटली ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका वेव वेक्टर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, एंड दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट ट्रू. वी डोंट गेट इनफाइनाइट करंट, वी डोंट गेट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. तो व्हाई, ऐसा क्यों होता है, हमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी क्यों नहीं मिलती है? द रीजन इज कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, द इलेक्ट्रॉन्स गेट कोलाइडेड, द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन्स. इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन्स विद द इम्प्यूरिटीज के फॉरेन एटम्स होंगे, लैटिस इम्परफेक्शंस होंगे, यानी कि मेटल के ही एटम दूसरी जगह डिसलोकेट हुए होंगे. जो मेटल के एटम्स हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन वो ऑसिलेट करते हैं, सो बिकॉज ऑफ कोलिजन्स विद फोनॉन्स. इसी तरह पीरियोडिसिटी अगर कहीं पे ब्रेक हुई हो तो इन सब इम्परफेक्शंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन खाते हैं, तो फर्मी सरफेस जो है इट इज मेंटेन्ड इन अ स्टेडी स्टेट. तो इसमें जो इंक्रीमेंटल वेलोसिटी मिलती है दैट विल बी गिवन बाय द इक्वेशन दैट फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम हम मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे. हम यहाँ पे मास की जगह m स्टार लिख रहे हैं. वी कॉल इट इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड. We treat this mass as constant, so it will get out of the differentiation, so we will get m star dv by dt. तो यहां से हमें, अगर हमें dv के लिए एक्सप्रेशन निकालनी हो तो we will get dv is equal to, तो m मल्टीप्लाई है, that will get divided to force, और dt डिवीजन में है, that will get multiplied. So we will get this relation for the incremental velocity. फोर्स की जगह हम इसका वैल्यू यूज करेंगे, सिंस फोर्स इक्वल्स माइनस ई टाइम्स ई, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो we will get equation number 5. Next we have to integrate this equation number 5. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है वेलोसिटी और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है टाइम. तो सपोजिंग व्हेन टाइम इज 0, the electron starts its journey from 0 velocity, and because of the acceleration due to electric field, electron attains a velocity जिसको हम drift velocity कहते हैं, after some time tau f. Tau f is relaxation time. That is, this is the time between two successive collisions. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो, तो हमें
लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे vd मिलेगा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करके दिस इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो टू t। उसके जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ओनली टाउ f। So that means we will get equation number 6. The drift velocity equals minus e times capital E by m star into tau f. This is the expression for drift velocity. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम मिलता है दो कलिजन्स के दरमियान ट्रैवल करने के लिए, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज vd, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? नाउ डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। So it will travel a distance, its speed is drift velocity, its time is relaxation time. So it will travel a distance vd into tau f. अगर इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, this is its cross sectional area a, and the electron has traveled a distance equal to vd tau f. This is the distance traveled by electron and the cross sectional area is a, so it becomes a cylinder. और सिलेंडर का अगर हमने वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम इक्वल्स बेस एरिया इनटू हाइट और लेंथ। नाउ हियर बेस एरिया इज a and into height is vd tau f. So this is the volume due to this distance. Next, what is the number of electrons that travel this distance? Now we can write number of electrons, number of free electrons equals, I will write again, number of free electrons, इसको हम डिवाइड भी करेंगे वॉल्यूम और मल्टीप्लाई भी करेंगे वॉल्यूम। और जो ये टर्म है इसको मैं ब्रैकेट में एनक्लोज करूंगा। Why? Because this is number of free electrons per unit volume. This is free electron density. इसको हम small n से डिनोट करेंगे and the volume वो हमने यहाँ पे अभी उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव की है। So it is n into a vd tau f. So this is the number of free electrons. नेक्स्ट वी हैव टू सी कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अगर ट्रैवल किया है, दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव ट्रैवल्ड सर्टेन डिस्टेंस। तो कितना चार्ज ट्रैवल किया होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सो वी विल गेट दिस इज द चार्ज दैट हैज ट्रैवल्ड दिस मच डिस्टेंस। So when this much charge has traveled, so we can see what is the current because of this movement, and current is given by the charge flowing per unit time. तो इसको हम divide करेंगे time, तो this tau f will get cancelled, so we will get minus NEA VD, drift velocity. Then we define a vector, and that is called the electric current density. It is given by the current flowing per unit area. तो इसमें हम करंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस NEA-VD, सिंस इट इज अ वेक्टर तो हम VD के ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे, डिवाइड एरिया, A and A will go, so we get expression for electric current density as minus NEA
EVD। अब इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। वी विल सबस्टिट्यूट बिकॉज अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव की है, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम ये एक्सप्रेशन सबस्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल गो, n, then we have e twice, so e का स्क्वायर मिलेगा, then tau f divided by m star into electric field. So equation number 7 gives us expression for the electric current density. Now we have got microscopic form of Ohm's law as given by equation number 8, that J equals sigma E. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को कंपेयर करें, तो इक्वेशन नंबर 8 का लेफ्ट हैंड साइड है सिग्मा ई, इक्वेशन नंबर 7 का राइट हैंड साइड है एन ई स्क्वायर टाउ एफ divided by m star into electric field. Electric field will get cancelled on both sides, so we get expression for electrical conductivity as n e square tau f divided by m star. So this is the expression for electrical conductivity as given by quantum free electron theory. तो जरा हम देखें कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, वी फाइंड दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज जस्टिफाइबल, दिस इज रीजनेबल, बिकॉज जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, उतने हमें ज्यादा करंट कैरियर्स मिलेंगे। सो obviously that will increase the electrical conductivity. We also find that sigma is directly proportional to the relaxation time. This is also justifiable because this relaxation time tau f is basically time जो एक इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन्स के दरमियान मिलता है। तो जितना ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन को मिलेगा उतना उसको ज्यादा टाइम मिलता है बेसिकली एक्सेलरेट होने के लिए, अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए। एंड when drift velocity will be more, electrical conductivity will be also having a large value. अच्छा, मीन फ्री पाथ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, सिंस डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। तो speed is Fermi velocity and time is relaxation time. यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फर्मी वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। Fermi velocity is velocity attained by an electron due to thermal agitation, and this is a function of temperature, and it is of the order of 10 raised to power 6 meter per second. So this is expression for mean free path कि दो collisions के दरमियान on the average एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहां से हमें रिलैक्सेशन टाइम के लिए एक्सप्रेशन मिलती है लैम्डा बाई वी। अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहें फॉर कॉपर, द फर्मी वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 6 meter per second. Mean free path as long as 10 centimeter can be achieved, but then we have to cool the metal to a very low temperature like liquid helium temperature range. So conductivity
is sigma equals n e square tau f by m star। तो यहाँ पे हम tau f यानी रिलैक्सेशन टाइम की जगह इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ। सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट वी शैल गो टू रेजिस्टिविटी। हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी के सोर्सेज क्या है और रेजिस्टिविटी कैसे वैरी करती है विद टेम्परेचर। There are two contributions to the resistivity. Number one is resistivity due to phonons, and phonons means lattice vibrations. So when electron travels in metal under the effect of an external electric field, the electron undergoes collisions with lattice vibrations. So that gives one contribution to resistivity, and another contribution is rho impurities. So this is because of impurity of a metal के impurity में imperfections सारे आएंगे। इसमें फॉरिन एटम्स आ सकते हैं, फॉरिन एटम कोई आया होगा, या एटम जो है वो डिसलोकेट होके दूसरी जगह गया होगा, कहीं पे पीरियोडिसिटी ब्रेक हुई होगी। तो जो भी इम्परफेक्शंस हैं, तो उन इम्परफेक्शंस के साथ इलेक्ट्रॉन कोलिजन खाता है। तो बिकॉज ऑफ दोज कोलिजन्स वी गेट अनदर कंट्रीब्यूशन टू रेजिस्टिविटी। सो वी हैव गॉट टू कंट्रीब्यूशंस टू रेजिस्टिविटी। तो इसमें से जो पहला ही टर्म है रो फोनॉन्स, इसको हम आइडियल रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज जब हम एक मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके जो एटम्स हैं दे विल वाइब्रेट मोर विगोरसली। एक तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू करेंगे और ज्यादा दूर तक ऑसिलेट करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली electron will undergo more collisions, so the resistivity will increase. So that means rho phonons is a function of temperature. और अगर हम एक मेटल को बिल्कुल प्योर कर दें, यानी कि उसमें जो भी इम्परफेक्शन है उसको दूर कर दें, जो भी इम्प्योरिटी है उसको निकाल दें, सो देन दिस सेकंड टर्म रो इम्प्योरिटी विल बिकम जीरो। सो दैट मीन्स रो फोनॉन्स इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर स्पेसिमेन। इसके लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला हमें मिलता है that resistivity due to phonons or the ideal resistivity is given by temperature by mass of atom into theta r square. This is temperature very close to d by temperature into a function of temperature by theta r. At very high temperatures, this function of temperature by theta r is very much equal to 1. So we get resistivity as given by T by m theta r square. So this is the expression for resistivity due to phonons, and it is also called ideal resistivity. दूसरी जो contribution है resistivity due to impurities, and this is called residual resistivity. इसको हम residual इसलिए बोलते हैं because this depends on temperature, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रो फोनॉन्स विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। बट इवन इफ वी मेक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक भी डिक्रीज करें, स्टिल वी गेट सम
resistivity because that is due to impurities, and that remains as the residual resistivity. So residual resistivity is the resistivity due to imperfections like impurities, crystal defects, etc. And it does not depend on temperature, rather it depends upon the concentration of impurities. Now let us see how resistivity varies with temperature. अगर हम एक प्योर मेटल की बात करें तो since the resistivity equals rho phonons plus rho impurities, और जो हमारा प्योर मेटल है उसमें impurities नहीं है, so rho impurities equals 0. तो अगर हम एक प्योर मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इट विल डिक्रीज लाइक ए कर्व, and at absolute zero we will have zero resistivity. At very low temperature like liquid helium temperature 4 Kelvin, वहां पे resistivity due to phonons negligible होते हैं. और अगर हम प्योर मेटल की बात करें वहां पे हमने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्यूरिटीज 0 बना दिया है, तो हमें जीरो रेजिस्टिविटी मिलेगी. बट इन जनरल हमारे पास मेटल इम्प्योर होता है, so if we decrease temperature the resistivity will decrease, but at absolute zero we will get a constant value of resistivity, and that resistivity is due to impurities, and that is a constant. Now, as temperature increases, the resistivity due to phonons becomes dominant, and the resistivity due to impurities can be neglected. So, as temperature increases, resistivity due to phonons increases, and hence resistivity also increases. And when temperature becomes large enough, like room temperature 300 Kelvin, the resistivity due to phonons becomes significant. So that's why we can then neglect resistivity due to impurities, and we can write that resistivity just equals resistivity due to phonons, and that is a function of temperature. Matheson's rule is simply a statement that total resistivity of a crystalline metallic specimen is the sum of two contributions. Number one, resistivity due to thermal agitation of the metal ions of lattice, and this depends on temperature. And the other contribution is resistivity due to the presence of imperfections like foreign atoms, crystal dislocations, etc. And this contribution is temperature independent. This is Matheson's rule. तो एक मेटल कितना प्योर है उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी रेशो. रेजिस्टिविटी रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो, न्यूमरेटर में हम इस मेटल की रेजिस्टिविटी लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट इज अबाउट 300 केल्विन, और डिनोमिनेटर में हम इसी मेटल की रेजिडुअल रेजिस्टिविटी लेते हैं, एंड दैट मीन्स अबाउट 4.2 केल्विन पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या है. सो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी एट 300 केल्विन and what is resistivity at 4.2 Kelvin? This is called the resistivity ratio. Now resistivity ratio से हमें कैसे पता चलता है कि एक मेटल कितना प्योर है. Supposing resistivity ratio has got very large value, so that means न्यूमरेटर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है. जब डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है, the resistivity at 4.2 Kelvin is predominantly resistivity due to impurities only. And resistivity at 300 Kelvin is predominantly resistivity due to phonons.
And when this will have large value, that means resistivity due to phonons is large and resistivity due to impurity is small. तो इसका मतलब है कि impurities कम है और metal उतना ज़्यादा pure है. So the more the resistivity ratio, the more pure the sample.